Well, Diwali is the biggest festival celebrated across India, and after last year's lull due to the pandemic, the enthusiasm is double this year. While this is going to be a crucial period for all of us, festivities have been at its peak. Our reporters are joining us live from across multiple cities to give us a sense of how India is celebrating. So we are going to go across to our reporters live at the moment. Joining us live is Sabyasachi from Kedarnath. I have Mugilan joining us from Chennai, from Bondi Bazaar. I have Sandhya joining us from Mumbai, Shrija from Bengaluru, Prerit from Delhi. So let's begin with the national capital then. Prerit, I beg your pardon. Prerit is joining us, yes, from Delhi. So let me go across to you. Prerit, tell us what's happening. I believe you're in the Bengali market. And I have fond memories of that place. It's usually buzzing at this time of the year, especially during festivals. What do you see around? Show us around a bit. जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि राजधानी दिल्ली में लोगों में खासा उत्साह है दिवाली के त्यौहार को लेकर के। और ये जो बात है ये मैं आपको यहाँ की तस्वीर से दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से लोग उत्साहित होकर के यहाँ पर दिए खरीद रहे हैं, यहाँ पर जो कैंडल्स खरीद रहे हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर लक्ष्मी जी और गणेश की मूर्ति है वो लोग खरीद रहे हैं। तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी सब लोग खरीद रहे हैं। जो कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। ये बताइए कि किस तरह का इस बार कितने उत्साहित हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, बाकी से बात तो यहाँ पे लोग जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं दिवाली को लेकर के। आप देखिए कि किस तरीके से खरीदारी की जा रही है। देखिए ये किस तरीके से गणेश जी की मूर्ति हो या लक्ष्मी जी की, क्योंकि आमतौर पर दिवाली में लक्ष्मी की पूजा होती है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है और तमाम तरह के जो है वो कैंडल्स हैं, यहाँ पे तमाम तरह के दिए बनाए गए हैं। उसके अलावा रंगोली को लेकर के भी यहाँ पर तमाम जो वो कलर्स हैं। तो ये जो मैं तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से लोग उत्साहित होकर के दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस बार दिवाली में जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। तो लोग जो है इस दिवाली के जश्न को खास तरीके से मनाने के लिए तमाम तरह की जो कलाकृतियां हैं दिए में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये जो दिवाली है, ये दीपावली इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से 2020 में लोगों के बीच में जो कोरोना का खौफ था और उसके बाद 2021 में जो दूसरी लहर के दौरान कोरोना ने कई लोगों की जिंदगी ले ली, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक हताशा का भाव आया था। और इस तरह के जो दीपावली का त्यौहार है तो उसको लेकर के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। और लोग इसके जरिए जो दूसरी लहर के दौरान जो स्थिति थी उसको लोग भूलना चाह रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खरीदारी करें। बात भी हम करने की कोशिश करें कि यहाँ पे देखेंगे कुछ लोग हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये इस तरह की जो तमाम जो रचनात्मक चीजें दिखाई जा रही है कि जो तस्वीर है ये कितनी सुंदर यहाँ पे मूर्ति है और कितनी सुंदर यहाँ पे शुभ दीपावली और तमाम जो है। उसके अलावा ये देखिए कि तमाम कलर्स के कैंडल्स हैं। और ये जो है यहाँ पे मैं अपने एक बार कैमरा पर्सन कहूँगा कि ये दिखाइए, आप जरा तस्वीर दिखाइए कि कितनी भीड़ यहाँ पर लोगों की उमड़ रही है। लोग यहाँ पर जो वो खरीदारी करने आ रहे हैं कि इस बार जो है क्रैकर्स फ्री जो है वो दीपावली मनाएंगे। तो उसको लेकर के यहाँ पर जो लोग हैं वो दियों के जरिए और माँ लक्ष्मी की वो मूर्ति ले रहे हैं और उसके बाद पूजा करके वो जो है इस बार दिवाली मनाएंगे। Ji, that is very important. You know, the fact that people are focusing on the diyas, not so much on the crackers. Let's go to another center. Shrija, coming to you. Tell us what's happening in Bengaluru. The point of the matter is there is renewed enthusiasm this season, isn't it? With COVID cases receding, people are now coming out, or at least wanting to have a reason to celebrate for Diwali, and also, of course, for the fact that now so many businesses are open, people are willing to get back to their lives. Well, firstly, wishing all our viewers a very happy Diwali, and we are right now at Kamnali, which is the eastern part of Bengaluru. Now, this is one of the most bustling places after the oldest and the biggest shopping centers as far as Chickpet and Commercial Street is concerned. And if you're talking about response, but as compared to last year, we're looking at least about 20 to 30% increase in terms of footfall of people. Yes, people are stepping out. They're more confident. That's also one reason in terms of the vaccinations that has happened. But there are quite a lot of people who are stepping out to come and make their last minute purchases. And yes, a lot of shops especially are, in fact, they have decked up themselves, and also they've prepared themselves in terms of whether it is diyas or trinklets. Now, these are the kind of things which they have, in fact, placed outside shops.
And a lot of people that we are speaking to, what we understand is that there has been a plea. Now, this has been very common in terms of every year is concerned, where people say, let's not burst crackers, let's not, in fact, face the pollution. Instead, let's have a very peaceful Diwali in terms of lighting of the lamps. Now, that is something which a lot of people have always concentrated on. If I could go across to one particular person here, a very happy Diwali. What are you here to purchase for? I'm not here to purchase, I'm just here accompanying. Oh, you're just joining your friend. Let me go across to a couple of people over here. Happy Diwali to you. Happy Diwali, ma'am. What are you here to purchase? Everything which is needed in Diwali festival. Diwali celebration. Are you bursting crackers? No. You're not bursting. It's going to be a very peaceful Diwali with just diyas and sweets. Diyas and sweets. We like to have a Diwali, with peaceful, and we don't like to put crackers and everything. Correct. Okay. What about you, sir? What are you here to purchase? The last minute All shopping. regular stuff, Diyas. diyas and all. Okay, what do you want to talk about where people, there are certain people, where they want to burst crackers. What about you? What is your opinion? See, crackers, we cannot avoid it. Okay. Definitely we will be bursting it. Yes, we may be in the control, or we maybe choose the right kind of crackers. Okay, well, very happy Diwali to you. Let me go across to the shopkeeper here. What is the response like this year? Last year? The response. What is the response this year? एरिया में हाँ. फिर बड़ा तो ये हम फैंसी आइटम सेल करता है वो पूरा दीपा वगैरह सभी हो Okay. अच्छा है एकदम Response this year is good as compared to last year? थोड़ा 75%. Okay, that's a good increase. Well, he's saying that at least he's looking at 75% of increase in terms of footfall. Well, that is not really across, if you're talking about a lot of commercial places, shopping complexes, but there are some certain small scale businesses that are looking at 75% increase in terms of business. And we just did go across to a few of the customers who were doing their last minute shopping. What they're telling us is that they clearly do not want any crackers to be burst, and they want it to be a very nice, beautiful, peaceful Diwali, but just lighting diyas and exchanging Yes, and that is why I can see behind you a lot of home decoration items are selling. People are buying those items. Coming to you now, Sabyasachi is joining us from Kedarnath. I'm very curious to see what the scene is like over there, away from all the cities. Here is one of those places highly revered by the majority of people in India. Tell us what is happening there, Sabyasachi. Where exactly are you? And show us around, please. Well, right now I'm just standing in front of the Kedarnath shrine. You can see the Kedarnath shrine has been decorated with lights and flowers. And since morning, the Kedarnath shrine has been bustling with devotees. Since morning they have been coming here, and tomorrow also it's expected to be a heavy footfall here in Kedarnath. And the main focus here in Kedarnath this time around is the redevelopment that has been done. Earlier, devotees had to travel through a very difficult path to reach here, but now there is a concrete road which has been let down, which gives lot of comfort to the devotees who are coming here in large numbers to visit the Kedarnath shrine. And since it's Diwali, the amount of people coming here in Kedarnath is going to be massive. Along with that, a lot of sadhus are also expected to come here, especially on 4th, to visit the Kedarnath shrine. Okay, yes, it's so nice to see, behind you, the holy shrine. Like you said, most revered. There are a lot of devotees who are likely to gather out there. This is Kedarnath we are talking about. My colleague Sabyasachi is there to witness. And fortunate of you to be there, Sabyasachi. Let me go across now to Mugilan in Pondi Bazaar in Chennai. Yes, Mugilan, over to you. What is it like in Chennai? What is the turnout like? Where exactly are you at this point? Show us around, please. Definitely, the festivities always bring smiles and happiness in people, and it's quite evident here in Pondi Bazaar. Now, people are bustling the market
to make the last minute purchases, and we are at Pondi Bazaar, and we can also see that people are trying to make the last minute purchase. And as far as Chennai is concerned, Chennai is a district where people from all other districts in Tamil Nadu come and work, and they have returned back to the city. And yesterday or the day before yesterday, one cannot even find a food space here to stand and make purchase. But you can see the situation now here. Now all the Chennaites are coming to make the last minute purchase, and we are for last 1 week we are showing the kind of celebration and the preparations that are happening here. People this year people are coming out in large number to make purchase to celebrate Diwali, because last 2 years we have seen they have refrained to their residence. But this year, as the COVID situation has come down, particularly here in Chennai, now we can see people coming forward and making purchases to make to celebrate a very happy Diwali this year. Yes, and I can see most people are masking up, and it's a good sign that there is no overcrowding, which was one of the fears that once the festivities start, people will crowd these markets, not maintain distance, not follow COVID protocol. But at least from what I can see in the pictures that Mugilan is bringing us, people are wearing masks, and there isn't much of an overcrowding situation as of now. Sandhya, coming to you last, of course, you're in Mumbai, very close to where I am right now in Mahim, I'm told. Tell us what is happening around in Mahim, Sandhya. Sandhya, can you hear me? I believe you're in Mahim enjoying the Diwali festivities. What are you up to and what's happening there? Yes, Afrida, now I can hear you. First of all, a very happy Diwali to you and to all our viewers. And yes, I am in Mumbai's Mahim area, and this beautiful lane which you can see is called Kandil Gali. And everybody who is from Mumbai, of course, they know about this lane. But let me talk, and this is for the benefit of those who are not from Mumbai and are watching us. This is that one place where every year Mumbaikars come to get lamps to decorate. Now in Mumbai we call them Kandil, and before I show you around, I show more of this beautiful lane, Afrida, let me talk to Krishna here. So Krishna is somebody who sells lamps here, Kandils here, and let's try and get his response that how this year is different for him in terms of business when it comes to Diwali shopping as compared to last year. Krishna, सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. मुझे आपसे एक सवाल पूछना है. पिछले साल हमने पहली दिवाली मनाई थी कोरोना के बीच में, इस बार दूसरी दिवाली है. इस बार क्या फर्क आपको दिख रहा है? चहल पहल ज्यादा है, खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं लोग? पिछले साल की तुलना में अगर हम लोग कंपेयर करें इस साल के, तो पिछले साल से काफ़ी बेटर है. पिछले साल कोरोना के वजह से काफ़ी सभी लोगों को प्रॉब्लम हुआ, तो सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाए पूरी तरीके से. हर एक लोगों के कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है. तो इस साल पहले साल से तो 2020 के हिसाब से इस साल काफ़ी बेटर है. तो होप कर रहे कि आगे भी ये सारी चीज़ें इससे भी और अच्छे बेटर हो. एब्सोल्युटली, हम सब यही होप कर रहे हैं. अच्छा, बहुत खूबसूरत कंदील आपने लगाए हुए हैं हमारे दर्शकों के लिए. अगर आप थोड़ा बता पाएं कौन सा वाला है. जैसे एक मैं मछली वाला देख सकती हूँ, आप थोड़ा अगर हमें एक्सप्लेन कर पाए कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है, किसकी मांग ज़्यादा है. एक्चुअली मेरे पास काफ़ी वैरायटी है कंदील के, हैंडमेड, स्पेशली इंडियन हैंडमेड. जैसे मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं बैम्बू के हैंडमेड कंदील है. तो ये काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि ये इको फ्रेंडली भी और इसको रीयूज भी कर सकते हैं लोग. और इस बार तो कोरोना के वजह से चाइना के जो कंदील से वो तो काफ़ी कम हुए, मतलब आए ही नहीं. उसका डायरेक्ट बेनिफिट कहीं ना कहीं आप जैसे आर्टिस्ट, यस इंडियन आर्टिस्ट को काफ़ी बेनिफिट मिला है और लोग भी ये पसंद कर रहे हैं. तो आप मेरे शॉप में देख सकते हो जो बैम्बू के कंदील है अभी काफ़ी कम हो गए, मतलब काफ़ी स्टॉक से तो काफ़ी. ये जो लालटेन जो दिख रही है, हाँ, ये जो लैम्प ये काफ़ी पॉपुलर है. तो ये मेरे काफ़ी स्टॉक्स में थे, तो मोस्टली ये बहुत सारे बिक चुके हैं. तो अभी मेरे पास इतने ही प्रोडक्ट्स बचे हैं. बाकी सब आप देख रहे हैं फोल्डिंग वाले कंदील है, ये सब लेजर कटिंग वगैरह. तो लेकिन ये हैंडमेड है, मीन प्योर हैंडमेड. तो ये ज्यादा बिक. यस. अच्छा, ये मुझे ना मछली के शेप में भी बहुत खूबसूरत कंदील दिख रहे हैं. ये मतलब ये पूरे कपड़े का बना हुआ दिख रहा है. ये भी इंडियन हैंडमेड कंदील है. ये भी बैम्बू और कपड़े से बनाया हुआ है. इसकी भी डिमांड होती है, तो काफ़ी रनिंग है. ये भी मेरे पास स्टॉक्स में अभी बहुत कम है. बाकी सारे बैम्बू वाले हैं, ये वाले नहीं. ये बैम्बू नहीं है, ये लेजर कटिंग MDF मटेरियल के है.
तो ये भी काफ़ी रनिंग में है। तो मोस्टली जो मेरे शॉप में रहते हैं, मैं काफ़ी थोड़ा डिफरेंट एज अ कंपेयर कर बाकी लोगों से, मैं काफ़ी डिफरेंट वैरायटी है। लेकिन जो मेन महाराष्ट्रन का दीपावली जो है इंडियन कल्चर, तो वो आकाश कंदील होता है। तो आकाश कंदील भी यहाँ पे बहुत सारे हैं और वो काफ़ी लोकप्रिय है आकाश कंदील। और अच्छा, महाराष्ट्र से बाहर के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए अगर आप एक्सप्लेन कर सके आकाश कंदील क्या होता है? यस, आकाश कंदील महाराष्ट्र का सबसे फेवरेट बोल सकते हैं, सबसे लोकप्रिय कंदील है। काफ़ी पसंद किया जाने वाला है कंदील है। तो ज़्यादा करके लोग आकाश कंदील ही लगाते हैं। आप अपने घर में क्या लगाएंगे? क्या लगाया है? मैं तो आकाश कंदील ही फिर सभी लोगों को ये करूँगा, क्योंकि महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई का हूँ स्पेशलिस्ट। तो आकाश कंदील। Absolutely. Thank you so much, Krishna. Happy Diwali to you once again. Happy Diwali all of you. So here was Krishna Afrida, and you can see these beautiful lamps which are here. And Yes. this is not just this shop, not only Krishna's shop, Afrida. Let me show you a little bit more of Kandil Gali. So here, beautiful colors. So Akash Kandil, about which Krishna was referring to, these are Akash Kandils. And Right. that is something, these Kandils are extremely popular among Mumbaikars. Yes. And let me show you some more of these beautiful Kandils. सर, आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए हैं कि दुकानदार हैं? आप शॉपिंग के लिए हैं कि दुकानदार हैं? अच्छा, कैसा इस बार रिस्पांस कैसा मिल रहा है पिछले साल के? हाँ, बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छा मिल रहा है। आपकी भी कंदील की शॉप है या कपड़ों? ये क्या करने खाली होने कपड़े की, अपने इसका ही है, कंदील के ही है खाली। अच्छा, कौन सा? हम जैसे वहाँ पे कृष्णा से बात कर रहे थे तो बता रहे थे आकाश कंदील बहुत बिक रहा है। ये वाला, दिस वन। Sandhya, the candles are beautiful and you look So, amazing as too you out heard there. from some of the In the middle of all the candles and all the lamps, you are glowing as well, Sandhya. And I'm sure you're having a good time bringing this report to us. But unfortunately, we have to go to other centers.